To live in this world, what you need most? सबसे पहला क्या चाहिए आपको जीने के लिए दुनिया में? फूड है। अच्छा, फूड चाहिए। तो 5 दिन फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अच्छा, फूड से भी जरूरी कुछ है? स्लीप चाहिए। स्लीप से भी जरूरी कुछ है? तो ये आपको याद नहीं था कि सबसे पहला एयर चाहिए ना। फूड में अभी देखो आप, somebody can Google, one girl fasted 110 days, 16-year-old girl, 110 days only little water, Jain, no food, only water. She lived or not? It's in Times of India. 16-year-old girl. So food is okay, you can survive. She survived 3.5 months. 3.5 months without food. Jain sadhus, they survive 1 year without food. But air, you will die, right? 5 minutes also you won't survive. तो एयर का प्रॉब्लम क्या है? एयर तो फ्री है ना, अनलेस यू आर हॉस्पिटलाइज्ड। एयर तो फ्री है कि नहीं? तो एयर लेने में कंजूसी को क्या बोलते हैं तेलुगु में? व्हाट डू यू से इन तेलुगु? कंजूस माने माइजर। कंजूस। तो जब हवा में इतना है तो फिर कंजूस क्यों होना है? बात समझ रहे हैं मेरा? थोड़ा एयर लेना चाहिए, क्योंकि एयर इज प्राणा। तो एयर तो क्वालिटी खराब हो गया है, सो एटलीस्ट टेक सम क्वांटिटी। इसलिए क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ इज practicing deep breathing, oxygenating your cells in the body. हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो गया है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइफ, वी डोंट हैव टाइम। बोलते हैं ना, सांस लेने का फुर्सत नहीं है हिंदी में। अभी आई डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ इवन, बाबा कम टुमारो। या आई डोंट हैव टाइम टू डाई ऑल्सो। तो पहला चीज है, डेली वी शुड टेक एयर, बिकॉज विदाउट एयर नो बडी कैन लिव। And air is a very simple thing. You have to, you see, pranayama is a very complicated, they can have so many complications. There are 3 things you can do. Very simple. Okay, I am showing you. With both the nostrils, take a deep breath. What happens is, use it or lose it. Do you know this principle? Huh? Use it or lose it. You don't know what it is. यूज इट और लूज इट का मतलब है, अगर कोई बॉडी मसल्स इफ यू डोंट यूज, बॉडी विल शिफ्ट इट्स अटेंशन अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट्स नॉट बीइंग यूज्ड, सो बॉडी विल नॉट वर्क ऑन इट. जस्ट लाइक व्हेन यू plaster your hand after breaking, then it becomes thin, the muscles start melting away because you are not using it. But if you start daily lifting, body will build because use ho raha hai, use, it's happening, using it. So if you don't use your chest and lungs much, there is a atrophy, what's the word, atrophy, that happens, you lose the parts of the capacity of the lung for intake. So you should take some deep breathing. I would recommend 108 times daily. 108. This is one. Okay.
So you do 35, 35, 35. This way 130, what 108 means, yeah. 35, 35, 38 or whatever, you know. And no, there are three types. So you do like that, and in the after 35 or 40 or 50, you do Anulom Vilom. So that is now you inhale from left side, exhale from, you know, so like this, whatever, you know. And then what you do finally with single side breathing, inhaling, exhaling. कुछ difficult नहीं है, right? You can put on some nice lecture, Prabhupada's lecture. Do something, hear something. Body को थोड़ा, body is craving. Body needs oxygen to work, you know. Cells needs to get recharged. तो अभी कार में आप पेट्रोल नहीं देगा तो क्या होगा? थोड़ा देना चाहिए ऑयल पेट्रोल, तब तो कार चलेगा. तो पहला चीज वो कर दो. आप समझ गए? इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कमेंट्स है आपका, कोई क्वेश्चन है? दिस मेक्स सेंस? आप में से कोई कर रहा है ऑलरेडी? यू आर डूइंग, बट कोई नहीं करता है, टाइम नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है, तो कहां से हेल्थ होगा? मेक सेंस ना? जो चीज वाट इफ 5 मिनट्स आपको स्टॉप कर दे या मर जाएगा आदमी, वो कितना एसेंशियल है? हाउ एसेंशियल इज दैट? So it is clear now. Any questions? Air is clear. What's your name? Surya. Arthamainda. So how it is correct, na? Air is required. You are taking air. Practice. See, we are leaving it to nature. No, something you have to consciously do. Breathing also. Not just body is doing, but something you have to do consciously. You have to make an effort of breathing also. Train your lungs, your body to breathe. Okay, done. Next point is, after air, what is the next most essential thing in life? आप बोलो, एयर के बाद में क्या चीज सबसे जरूरी है? हाँ, कभी पिया है पानी? पीते हैं. खाना तो 1 महीना बिना जी सकते हैं आदमी, 2 महीना 3 महीना जैसा मैंने बताया. पानी बिना कोई जिएगा? 10-15 दिन में आदमी मर जाएगा. हाँ नहीं, वो हमारे बहुत लोग हैं फास्ट, वाटर फास्ट करते 11-11 दिन. मैं जानता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन जनरल लोग के लिए मुश्किल है. पानी. तो नाउ पानी का क्या रोल है? पानी, वाटर इज लाइफ. यू रेड इन स्कूल, जल ही जीवन है, पढ़ा है? Save water, save life. Good. Now what is the big deal? We are all drinking now. So what is there to know? Drinking is something, drinking correctly is another thing. So body first function, water, you need hydration. You need for bodily functions. Body is how much percent water? Yeah? 70% is water. So after air, we need water. That reminds me, तो क्या होता है? You see, first bodily function, for example, cleaning. Now, in your home, you have a
washroom, toilet, right? To clean toilet you need sufficient water. बिना कर सकते cleaning? So हर function में body को water चाहिए. You need hydration. So कम से कम 2 liters of water are required. But problem क्या है? What is new in it? It is new because people are not drinking. In office you are so busy, you forget water drinking. This is a problem. Then they say I have something is wrong. Actually body is craving for water. What happens is, do you anybody has a plant at home? Any potted plants? You have. They need regular watering you need. So plant के लिए we are very careful, Just like car. कार we are very careful. Oh, इधर से पेट्रोल अच्छा नहीं, उधर डालो. खुद के लिए कहीं भी खा लेंगे. फिर कार का वो मैकेनिक अच्छा नहीं, दूर जाएंगे. हमारे है वो शमशाबाद में उनका मैकेनिक, उतना दूर जाते कार सर्विसिंग. हमने कहा आपका फूड के लिए आप इतना केयरफुल रहने से अभी तक आपको बीमारी नहीं होता. कार का बहुत देखते हम लोग. तो हाँ, इधर रखता. So the point is we are water, is life, but water has its quantity, quality and timing. 3 things. Hydration is required. Body needs to remain hydrated. First thing क्या करना है, सुबह थोड़ा पानी चाहिए. It's a time for flushing, सुबह पानी, उषा पान बोलते हैं, थोड़ा पानी चाहिए.